Very good morning and a very happy new year for all of you. Uh, ये जो lecture है, this will be the ongoing lecture of the current affairs. And before proceeding further, let's talk about something. If you need any personal guidance, any personal mentorship, please contact this number, Sir Chandrasekhar sir. Okay. इनसे आप बात करो, है ना, हैव अ वर्ड एंड आस्क हिम regarding your doubts, regarding your problems, regarding the situation you are facing, be it on any stage, प्री मेंस इंटरव्यू और किसी भी ऑप्शनल को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको दिक्कत होती है, हैव अ वर्ड विथ हिम. And today will be the lectures compiling from 1st of January till 4th of January. So let's talk about the table of content. So the first is the inclusion of Hathi community. It's on the border of this community border of Himachal and Uttarakhand. Okay. The second is ISRO's Expo Sat launch. एक्सपो सैटेलाइट है उसका लॉन्च हुआ है, उसके बारे में विल बी टॉकिंग. द थर्ड इज हाउ द नॉर्थ ईस्ट इमर्ज्ड, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ. फोर्थ इज एमएसपी के क्या कंसर्न है. एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आई होप इतना तो पता ही होगा सबको. फिफ्थ इज हाउ रेडियो कार्बन डेटिंग ने साइंस को रिवोल्यूशनाइज किया. रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू वी गेट द एज ऑफ अ पर्टिकुलर, कोई भी पत्थर वगैरह हमें मिल जाता है, एक्सकवेशन वगैरह में बहुत सारा ये हेल्प करता है. सिक्स्थ इज इंडिया जॉइंस वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट. ये अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है. सेवेंथ इज स्पेस एक्स, जो कि आई थिंक इसका इलॉन मस्क का कंपनी है, इज एन अमेरिकन, तो उसकी कंपनी है. तो इसने बोला है टू लॉन्च GSAT-20, जो कि ब्रॉडबैंड सैटेलाइट मिशन है. दी एट्थ इज कि 6 स्पेस मिशन टू बी एक्साइटेड फॉर इन 2024. मतलब 2024 में विल बी हैविंग 6 स्पेस मिशंस, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर with the first topic. And the topic, wait, and the topic is inclusion of Hathi community in scheduled tribe list. So what is the news? So President Draupadi Murmu's notification, they have been included in the ST community, जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट बनता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है, एंड द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव दैट. सो द हाथी कम्युनिटी हैव बीन इंक्लूडेड इन द दिस एसटी लिस्ट. ओके. सो जो हाथी टर्म है, इट वाज प्रीवियसली एसोसिएटेड विथ SCs, leading to uncertainty about the inclusion in the ST list and classification of Hatis from the Transgiri area of Sirmaur district. Sirmaur यहाँ पे है हिमाचल में. So you can see that. So let's talk about Hathi community. So they originally come from the tradition of selling produce at local markets called हाट. नॉर्थ में बोलते हैं ना, हाट, हाट पे आ जाना, सब्जी ले लेना हाट पे, इस तरीके से. सो फ्रॉम दैट दिस हाटी टर्म हैज originated, and the geographical presence is in the Himachal Uttarakhand border. Okay. Situated in the Giri and Tons river basins. They are both this Yamuna ka, these are tributaries. Okay. Yamuna tributaries. So remember that. ठीक है. और यहाँ पे you can see that here is Tons, here is Giri, here is Sirmaur. If I can highlight that, Sirmaur, this is Giri, and this is Tons. ठीक है. These are both the this Yamuna का they are part. ठीक है. तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है. So let's excuse me. So let's proceed for the next topic.
And the next topic is ISRO का एक्सपोसैट लॉन्च अनवीलिंग एक्सरे ऑफ पोलरी. सो व्हाट इज द न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ ये है कि इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिशन ऑफ द ईयर, दैट इज C-58 ISRO's एक्सपोसैट. तो it's a dedicated satellite for X-ray polarimetry following NASA's IXPE. Launched from Satish Dhawan Space Center, it aims to study X-ray emissions. This is important. ये आपको देखना है. Study X-ray emissions from celestial sources using two payloads, that is Pollux and XSPECT. ठीक है, इस तरीके से you have to that Pollux and X is the part of this Expo Sat mission. Okay, so here you can see how the Pollux related this packages, platform module. This is the basic design of the satellite. Okay, so payloads and significance. Pollux, a medium X-ray instrument, measures polarization in the 830 keV energy band, observing sources like black holes. तो polarization जो मेजर होगा, पहले polarization समझते हैं थोड़ा सा. X-ray polarization consisting of electric and magnetic waves are typically disorganized in motion. It occurs, polarized X-ray occur when emitted by celestial sources like black holes. During passes through materials, scattered photons change direction and the resulting photon becomes polarized. Polarization measures offer insights into the nature of X-ray emitting source, that is the celestial body, and their complex radiation process. So that is polarization. The X aspect focus on soft X-rays, that is 0.8 to 15 keV, targets diverse cosmic entities such as X-ray pulsars and magnetars. These are part of the space. थोड़ा एक बार आप जाओ उसको गूगल करो, these words, try to find out their exact meaning. ExpoSat significance lies in pioneering X-ray polarization measurements, offering new insights into celestial process. So, what is ExpoSat? So, it's a ground-breaking polarimetry mission. Okay? The objective clear: investigate the diverse dynamics of astronomical sources under extreme condition. Okay, ये है इसका important objective. ठीक है. The third is it has two significant payloads. ठीक है. Pollux polarimeter instrument in X-rays, and the expect X-ray spectroscopy and timings. जो पॉलिक्स है ये कहाँ से डेवलप हुआ है? दैट इज फ्रॉम रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द एक्सपेक्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URSC बेंगलुरु. ठीक है, दीज आर दी this organizations, this institutes which have created this payloads. So globally it marks the second X-ray polarimetry. We are doing a lot in this space, and this is one of the confirmation in the form of example कि हमने just after I think US first है, second we are to understand how the celestial body are functioning following NASA's Imagine X-ray Polarimetry Explorer IXP launched in 2021. So we are not much behind, and this is how we are proceeding in the space. We are taking a leap, and this is a good thing actually, है ना? तो लेट्स टॉक वट एवर. यहाँ पे जो हमने बातें की है ना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है. जैसे एक्सपोसैट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? तो दिस पॉलिक्स एंड एक्सपेक्ट. तो पॉलिक्स और एक्सपेक्ट का फंक्शन क्या है? नाउ दे आर आस्किंग इन यूपीएससी, द क्वेश्चन इज मोर लाइक दे विल गिव यू अ नेम. फॉर एग्जांपल एक आया था क्वेश्चन कि अर्जुना अवार्ड
एंड मेजर ध्यानचंद, ऐसे ऐसे चार नाम दिए थे विच मेक अ कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है. एंड दे हैव आस्क्ड यू टू मैच द फॉलोइंग, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, ठीक है. सो नाउ दे आर डूइंग दैट, सो यू हैव टू बी वेरी थरो विद द टॉपिक्स. तो यू हैव टू नो कि ओके पॉलिटिक्स और एक्सपेक्ट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. Okay, so this is how you have to combine these studies. So let's proceed to the next topic, and the next topic is how the Northeast emerged. So how the Northeast emerged. So post this independence, the Northeast was created. It comprised of 8 states. As you can see here, this is Sikkim, Assam, Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura. So these are all the states comprising the Northeast region. So let's talk किस तरीके से creation हुआ. The term Northeast India gained prominence in the 1970s. Enactment of two pivotal laws. कौन सा? On December 30, 1971. First is Northeast Areas Reorganization Act, and the second is Northeast Council Act. ठीक है, तो these are two pivotal acts which helped in creation of this Northeast. देखो देखो नॉर्थ ईस्ट वाज देयर, बट दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी आर टॉकिंग जो एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प किया. नॉर्थ ईस्ट कॉम्पोजिशन एंड डेवलपमेंट. इट ऑफिशियली कंप्राइजेस 8 स्टेट्स, ठीक है, और 7 सिस्टर स्टेट्स. इनको अगर हटा दोगे तो इनको बोलते हैं, इफ यू रिमूव सिक्किम. एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, अ स्टैट्यूटरी advisory body for development and planning. See, North is not such ki we can cover in a form of a like something in PT, but you have to understand the factual. You have to have a basic understanding, factual understanding honi chahiye, and that's why we are studying this. So historically, the Assam was a frontier province akin to the Northwest, जैसे NWFP, Northwest Frontier Province, which we were having in the region of Pakistan wala. In the same way, colonial Assam was a frontier province, okay, in the British India time. The excluded area acted as a buffer between settled districts and international borders. Okay. Post independence, Northeast India faced unique governance challenge and security concerns. Abhi lately, few days back, we have a pact with the Ulfa of Assam, and बहुत सारा security challenges है because of the terrain, because of the interference of China and all that. So it's a complex issue, and things are being settled on a day-to-day basis. So, integration into Indian state and governance shift. India's post colonial efforts transformed the imperial frontier into a national space. Concerns over national security intensified after 1947, with 98% of the region's border becoming international. Okay. So, in 1960, जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, नागा इंडिपेंडेंस मूवमेंट, नागालैंड, ओके. बहुत लोग को आई एम श्योर स्टेट रीजन उनके आपको बेसिक डिस्ट्रिक्ट कैप नहीं पता होते हैं. सो हियर वी हैव नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. दीज थ्री अलॉन्ग विथ दिस अरुणाचल, ठीक है. यू हैव टू सी कहाँ से म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच यू नो यूपीएससी इज प्लेइंग. हियर बांग्लादेश इज हियर, ठीक है, ये बांग्लादेश है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किन किन स्टेट से बांग्लादेश का हम लोग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया. तो यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है. तो what are the legislative changes from 1971 to 87? तो नॉर्थ ईस्ट एरिया, दैट एक्ट विच वी टॉक, लेड टू मणिपुर एंड त्रिपुरा गेनिंग स्टेटहुड. ठीक है, हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं कि किस तरीके से स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, कि हर एक एक्ट के थ्रू देयर वर मैनी 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 स्टेट्स गॉट क्रिएटेड.
And through this act, through Northeast Areas Reorganization Act 1971, it led to the Manipur and Tripura gaining statehood. Like currently, the Kashmir is demanding statehood. उसी तरीके से earlier it was a UT, that is part of the this India, but it in the form of union territory. Union का territory है, that is not a state. Currently, form of Kashmir and Ladakh. So they were earlier in UT, but they gained the statehood in 19 through 1971 Act. Meghalaya and Mizoram emerged as states from autonomous districts in Assam. So they were autonomous districts earlier, but since it's a heavy, मतलब आप देखोगे तो it's a huge line, a huge area. So from there it got converted into a state. Arunachal Pradesh, formerly Northeast Frontier Agency, became a UT after later achieving full statehood in 1987. इसका भी कोई एक act होगा. So just think about just have a basic idea. So let's do an analysis. What is the impact of naming an identity? तो पूरा का पूरा चैप्टर है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, वेर आंध्रा एंड देर वाज इशू इन आंध्रा एंड मेनी स्टेट्स दैट लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए या रीजनल बेसिस पे होना चाहिए. देयर इज अ स्टिल डिबेट गोइंग ऑन इन कर्नाटका. So what is the impact of naming an identity? Adoption of the directional name Northeast reinforced a hierarchical relation between the region and the Indian heartland. ठीक है. Introduction of racialized categories like Northeasterner led to identity challenges and stereotypes. uh, अभी भी चिंकी बोलते हैं. मतलब बहुत सारे नेम से हम वी आर कॉलिंग द नॉर्थ ईस्टर्न. majority people who are preparing for UPSC, if they get the cadre of नॉर्थ ईस्ट, कई लोग तो नौकरी भी छोड़ देते हैं यार. तो this is obviously it's something very challenging for everyone in the integration process. The naming process, a result of muddling through without considering consequences, created as many problems as solutions. So this was the analysis, basic analysis, and this was all about the creation and emerging of basically your Northeast. So let's move to the next topic, and the next topic is the MSP concerns impacting crop diversification. So why it was in the news, the MSPs, how it is, the new MSPs are impacting the crop diversification. Okay, how this new MNC form is impacting the crop diversification. Crop diversification simply multiple crops. In many crops, diversity is not being seen, so that is diversification. So why it was in the news? A high MSPs for certain crops in impending crop diversification benefiting specific states. ठीक है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा, एक मान लीजिए कहीं गेहूँ हो रहा है और कहीं पे you are giving the MSP more to गेहूँ, so that is benefiting maybe the Punjab and Haryana wala region and impacting the southern states where more of a coffee plantation or sugar plantation is there. So kind of this how things are, what the news is stating. The various union ministries expressed concerns about the MSP proposal for rabi crops in the 2024-25 marketing season. So there are this rabi crops here. So there are basically three types. Rabi crops, I'm sure you must have read it. The second is kharif, ठीक है, and the third is जायद. ठीक है, तो they all have different set of this crops in it. For example, if I talk about राबी, ठीक है, तो राबी में जनरली क्या आते हैं? तो wheat, corn. Okay, the second is your खरीफ, उसमें क्या आते हैं?
तो उसमें बेसिकली यू लाइक राइस, शुगर केन, जूट, ठीक है, कॉटन, vegetables. So these make the part of kharif crop. The third is jayad. Okay. They include potatoes. Okay. This oil seeds, soya bean, oil seeds like soya bean and sunflower. So ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि राबी किसको बोलते हैं, दिस खरीफ किसको बोलते हैं, जायद किसको बोलते हैं. यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया. ओके, so let's proceed. These are the various this MSPs given. Cereals में 7 को दिया है, पैडी, wheat, ज्वार, बार्ली, बाजरा, रागी, मेज. और पल्सेस में 5 को दिया है, अरहर, ग्राम, मूंग, लेंटिल एंड उड़द. So how, what is the decision that was taken? So cabinet has approved the proposal to increase MSP for rabi crops like wheat, barley, gram, lentil, rapeseed, mustard and safflower. ठीक है, और maximum increases were 7.08% for the lentils and 7.0% 06% for wheat. ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया कि एमएसपी किन प्रोडक्ट्स पे इंक्रीज होने के कारण किस स्टेट्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और किस स्टेट्स का उस पर इम्पैक्ट आ रहा है. सो यू शुड हैव दैट बेसिक आइडिया. तो अबाउट द एमएसपीज, तो एमएसपी का जो बेसिक डेफिनेशन है बाय द गवर्नमेंट इज टू गारंटी फार्मर्स अ प्राइस as a minimum support for their agricultural produce. Basically, government एक promise करती है कि this is the minimum which we will be paying for the produce which you are having. In general, that is 22 products, but it changes also. और इस पे कई सारे सवाल आए हैं, so it's an important topic for UPSC. So how this MSPs are decided? So it comes from CACP recommendation. CACP is Commission for Agricultural Cost and Prices. Suggest MSP based on factors like production cost, demand, supply and market trends. ठीक है, तो CACP रिकमेंड करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है CCEA. CCEA is Cabinet Committee on Economic Affairs headed by PM. ठीक है, currently मोदी जी. ठीक है, here so CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs, approves the MSP's recommendation and take the final decision on approving MSP levels. If we talk about CACP, that is Commission for Agricultural Cost and Prices, it got established in 1965 as an attached office of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. ये एक दिमाग में रखना, that CACP is part of Ministry of Agriculture. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है एमएसपीज के? तो एंश्योर प्रॉफिटेबल प्राइसेस फॉर फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइस एंड प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. सो जो ऑब्जेक्टिव है वही यहाँ पे डिफीट हो रहा है, बिकॉज यू आर सपोर्टिंग सर्टेन ग्रुप ऑफ products. So that is not bringing completing the whole picture, which was the objective of giving the MSPs. Okay, which are all the crops covered? So basically 22 specified crops including 14 kharif crops, 6 rabi crops and 2 commercial crops. ठीक है, 14 खरीफ, ठीक है, 6 राबी एंड 2 कमर्शियल, जिनके लिए आपको MSPs, आई वुड सजेस्ट गो एंड हैव अ लुक कौन कौन से प्रोडक्ट्स भी हैं. ठीक है, फॉर अ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर दिस. ठीक है, so let's go on to the next topic.
And the next topic is how radiocarbon dating revolutionized science. Let's talk about the about this radiocarbon dating. So radiocarbon dating is a method determining the age of organic materials by measuring the decay of carbon 14 isotopes. ये जो है टेक्निक है, दिस हेल्प एस्टिमेट द टाइम लैप्स्ड since the death of the organism, offering insights into the archaeological and geological timelines. ठीक है, तो थ्रू मेजरिंग दी जो कार्बन 14 आइसोटोप है उसका मेजर करके वी गेट टू हैव अ बेसिक आइडिया कि कहाँ पे किस टाइम पीरियड में इसका डेथ हुआ है, कौन से टाइम पीरियड का ये ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द पास्ट. So it transformed various scientific fields, providing a measurable view of the past. It clarified human migration, the rise and fall of civilization, and Earth's climatic changes through this radiocarbon dating. तो इसके बेसिक्स क्या हैं? तो कार्बन 14 आइसोटॉप्स क्रिएटेड बाय कॉस्मिक रेज सर्व एज की एलिमेंट. तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? दिस रीडिंग ऑफ दिस कार्बन 14 आइसोटॉप. Plants absorb carbon 14 through photosynthesis, entering the food chain. When living organisms die, carbon 14 decay enables dating by measuring remaining amounts. तो इस तरीके से this is the basic of radiocarbon dating. And what are the isotopes? So it's a variance of chemical element with the same number of protons but different number of न्यूट्रॉन्स. तो एटम होता है, एटम में इफ दिस इज एन एटम तो ऐसे ऐसे करके होता है, उसका एक पार्ट होता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एंड दिस प्रोटॉन इज देयर. ठीक है, तो दैट फॉर्म्स एन एलिमेंट, दिस एटम एंड द मल्टी एटम्स फॉर्म द एलिमेंट. सो तो इन द वेरिएंट ऑफ अ केमिकल एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स के नंबर हैं इन द एटम, when it has same number of protons but different number of neutrons, तो उसे आइसोटोप्स बोलते हैं. ठीक है, दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट मे हैव डिस्टिंक्ट एटॉमिक मासेस. ठीक है, सो दीज आर आइसोटॉप्स. तो इवोल्यूशन क्या हुआ है डेटिंग टेक्निक्स में? तो अर्लियर टेक्निक्स लाइक गेगर काउंटर्स इवॉल्व्ड इनटू सोफिस्टिकेटेड सेटअप्स सच एज एक्सेलरेटर मास spectrometry, AMS. Earlier it was Geiger counters in the earlier parts of the 20th century or maybe 19th century. Now the evolved technique is accelerator mass spectrometer metry. AMS enhances precision, allowing dating of minute samples impacting fields like geology. So this Geiger counter it's an electronic device. Okay, क्या है ये? It's an electronic device to detect and measure ionizing this radiation. Okay, so Geiger counter ये है, उसी का evolved version is AMS. तो significance क्या है this changes in the precision technique? It's dating to organic remains, revolutionizing the archaeology and geology. थोड़ा बहुत फ्लॉज भी है, लाइक recent study proposes improved time resolution for more accurate. Of course, it's a process of refinement and containment and all that, but now the evolved version gives a better picture than before, and we can understand the basics of geology, architecture किस टाइम का बना हुआ है, to have a better historical perspective of our culture and tradition, and basically the things which were there in the past. ठीक है, अभी हमारा वी आर ऑल्सो डूइंग द स्टडी ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, द कॉस्मिक रेज, बहुत सारी चीज़ों में दिस विल हेल्प अ लॉट. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया जॉइंस वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट. तो न्यूज़ क्या है? तो इंडिया थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA and other institution is now part of the Square Kilometer Array Observatory. Square Kilometer Array Observatory. It's the world largest radio telescope project, that is SKAO. ठीक है,
स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी नाम में, क्योंकि वो जो टेलीस्कोप है वो बहुत लंबा है, एंड दैट्स वाई सच नेम इज देयर. तो अबाउट SKAO, इट्स एन इंटरनेशनल रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, एंड इन जो इसका फॉर्मेशन है दैट वे बैक्स इनटू द 1990s. It involves 20 countries, the entire SKAO project, spanning South Africa and Australia. It's an array of antennas, not a single telescope, strategically positioned in two continents. It aims to study celestial phenomena, including gravitational waves, and enhance astronomical observation, peering over 3,000 trillion kilometer into the universe. आप नासा के पेज पे जाओगे तो यू विल सी मेनी पिक्चर्स, स्पेस पिक्चर्स. सो प्रॉबेबली इधर से ही दे हेल्प देम टू टेक इट टू, इट हेल्प्स देम टू स्टडी किस तरीके से बाहर में स्पेस इज फंक्शनिंग. ठीक है, वी नो वेरी लिटिल ऑफ दैट, बहुत कम जानकारी है हमें अबाउट द स्पेस, एंड थ्रू दिस वी आर गेटिंग बिट ऑफ थोड़ा थोड़ा लाइक 0.1% और मे बी 0.2% ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. तो इंडियाज कंट्रीब्यूशन क्या है एसकेओ में? तो इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड मैनेजिंग टेलीस्कोप मैनेजर, अ वाइटल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. ठीक है, सॉफ्टवेयर एक है दिस टेलीस्कोप मैनेजर. ठीक है, टेलीस्कोप मैनेजर का जो फंक्शनिंग है उसका डेवलपमेंट है विच India is a part of. ठीक है, the Indian government approval backed by rupees 1,250 crores signals the initial step towards formal SKO membership. ठीक है, तो this is how you get inside the entire this SKO, and we have provided for this software telescope manager. ठीक है, तो रेडियो टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. It's a specialized instrument designed to detect and receive radio frequency emissions from celestial objects. It captures and amplifies weak radio signals, enabling astronomers to study radio waves emitted by stars, galaxies, and other astronomical phenomena, providing insights into the universe structure and behavior. तो क्या है ये? इट्स यू नो जो बेसिकली जो वीक रेडियो सिग्नल्स जो एमिट हो रहे हैं बाहर से. ठीक है, देर आर मेनी टाइप ऑफ सिग्नल्स, मेनी टाइप ऑफ वेव्स एंड ऑल दैट. तो वी आर स्टडिंग दिस रेडियो, तो उससे हमें इंसाइट्स मिलता है कि बाहर का सतह क्या है, टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों का खुलासा इससे होता है. ग्रेजुअली वी आर प्रोग्रेसिंग. अर्लियर टॉपिक ऑल्सो रेडियो कार्बन dating and all that, there are all other measures as well. Through that, recently we launched this Aditya L1 to study the corona. So through that we are getting a better picture of the universe. So let's move to the next topic, the SpaceX to launch India's GSAT 20. It's a broadband. GSAT 20 क्या है? What is GSAT 20? It's a broadband satellite. Okay. Okay. ठीक है, तो यू कैन सी NSAIL, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, दैट इज इसरो का कमर्शियल आर्म है, विल लॉन्च GSAT 20 यूजिंग SpaceX Falcon 9 SpaceX का दिस इट्स दिस क्या उसको बोलते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द SpaceX प्रोजेक्ट. ठीक है, और इट्स अ रॉकेट बेसिकली, and we will in the quarter 2, that is after April and all that, March April, we'll be launching this broadband, that is broadband satellite, that's the GSAT 20. Uh, Basically to harness India's power commercially, to tap the benefits of R&D carried out by ISRO, to spearhead its commercialization of space products, including production of launch vehicles, transfer to technologies and marketing of space produce. तो थोड़ा अबाउट GSAT 20 पढ़ लेते हैं. इट्स अ हाई थ्रू आउट KA बैंड सैटेलाइट. देर आर मल्टीपल बैंड्स. ठीक है, बैंड्स, देर आर बैंड्स लाइक KA है, और देर आर अदर बैंड्स एज वेल. एक हैव अ बेसिक आइडिया. तो हम लोग का ये कहा जाएगा KA बैंड सैटेलाइट. ये KA बैंड सैटेलाइट है, फुल्ली ओन्ड बाय NSAIL. It's has a weight of 4,700 kgs,
and 32 beams for pan India coverage. It provides an HTS capacity for nearly 40 Gbps, specifically designed for remote and unconnected regions. ये फैंसी टर्म्स पे नहीं जाना है, just have a basic idea. GSAT 20 aims to offer cost-effective KK band HTS capacity for broadband and cellular backhaul services. NSIL का रोल क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है? तो इट्स अ मैंडेटेड अंडर स्पेस सेक्टर रिफॉर्म सक्सेसफुली लॉन्च GSAT 24 in 2022 in a demand-driven mission. SpaceX Falcon 9, known as Reliability, will facilitate this launch as part of NSAIL strategic agreements. So about NSAIL, it's established in 2019 and it's a central public sector enterprise under the government of India, probably under Department of Space, I believe. ठीक है? It has the administrative control under the Department of Space. Commercial arm is function as commercial subsidiary of ISRO. Objective क्या है? Facilitate Indian industries and undertaking advanced space related endeavors, and headquarter is in Bengaluru. Have a basic idea. ठीक है, NSIL का क्या है? Headquarter कहाँ है? Bengaluru. This is the headquarter. Okay. HQ. ठीक है, तो we are done with this topic. Let's move to the next topic, which is this is the last topic for today, and the 6 space missions to be coming in the 24 2024 में. Objective यूरोपा क्लिपर मिशन. तो ये नासा का मिशन है, नासा. ठीक है, टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून. यूरोपा क्या करेगा? जुपिटर मून. ठीक है, जुपिटर मून को स्टडी करेगा. ठीक है, यूरोपा एम्स टू स्टडी इट्स आइसी सेल, सरफेस जियोलॉजी, सब सरफेस ओशियन एंड पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ. हर जगह तो हम लोग लाइफ ही खोज रहे हैं ना, व्हाट वी हैव अपार्ट फ्रॉम अर्थ. द लॉन्च विंडो इज अक्टूबर 10 2024. ठीक है, यूजिंग स्पेस एक्स फैल्कन हेवी रॉकेट. ठीक है, with arrival at the Jupiter system expected in 2030. Significance of the mission: it's a novel habitability signature to detect liquid water and offer insights into ocean worlds like Europa. Okay. The second is Artemis. This is also NASA's mission. First of all, Artemis 2 NASA mission, and the lunar itself states that moon. Okay. Initiative to return humans to the moon included Artemis 2, the first crewed mission since 1972, planned for November 2024. Mission scope. So, building on Artemis 1, it involves placing astronauts into lunar orbit before their return, paving the way for future moon missions and Mars exploration. Basically, आप रिसेंटली बहुत सारा न्यूज़ भी आया था दैट फैल्कन दी स्पेस एक्स, बेसिकली इलॉन मस्क ने ऐसे रॉकेट्स डिज़ाइन कर रहे हैं जो अपने आप अपने सतह पे उतर भी सकते हैं. अर्लियर दे गेट डिस्ट्रॉय इन दी स्पेस, बट नाउ दे कैन रिटर्न एज वेल. तो बहुत ज़्यादा कमर्शियली वायबल रहेगा ये चीज़. द लॉन्च रेडीनेस, तो 2000 पोटेंशियल लॉन्च इन 2025 if all necessary equipment including spacesuits and oxygen gear is prepared on schedule. ठीक है, वाइपर मून एक्सप्लोरेशन. ठीक है, तो वाइपर का फुल फॉर्म क्या है? वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर इज अ रोबोटिक एक्सप्लोरेशन मिशन 2024 नवंबर के लिए शेड्यूल्ड है, और मून के साउथ पोल को ये स्टडी करेगा. सर्चिंग फॉर वॉलेटाइल्स लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्रूशियल फॉर पोटेंशियल ह्यूमन लाइफ एक्सप्लोरेशन. तो वाइपर्स 100-day mission involves navigating extreme lunar condition from high temperature in daylight to frigid shadowed regions. The lunar trailblazer and prime one, again these are NASA के missions हैं. अगेन लूनर से यू गेट एन बेसिक आइडिया. ठीक है, तो सिंपल एक्स मिशंस, इट्स नासा स्मॉल इनोवेटिव मिशंस फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन इंक्लूड लूनर ट्रेल बेजर एंड प्राइम वन. ठीक है, लूनर ट्रेल बेजर क्या है? थोड़ा ये टंग ट्विस्टर्स हैं. इट एम्स टू ऑर्बिट द मून, measure surface temperatures and map water molecule location. Expected readiness by early 2024.
प्राइम वन क्या है, मिड 24 मिशन इन्वॉल्विंग ड्रिलिंग इनटू द मून सर्विंग एज अ टेस्ट रन फॉर वाइपर्स ड्रिलिंग द मैकेनिज्म, ठीक है। देन वी हैव जैक्सा, ठीक है। तो जापानीज, जापान, जैक्सा मार्शियन मिशन, तो जापान, दे आर एक्सप्लोरिंग मून, ठीक है, टू स्टडी मार्स, मून, फोबोस एंड डीमोस। जो ये मार्स के दो मून हैं, फोबोस एंड डीमोस, को ये स्टडी करेंगे। सितंबर 2024 का इनका लॉन्च डेट है। मतलब एक्सपेक्टेड विल ऑब्जर्व लैंड ऑन फोबोस सरफेस, कलेक्ट सैंपल्स एंड रिटर्न टू अर्थ ओवर 3 years। साइंटिफिक गोल क्या है, डिटरमाइनिंग द ओरिजिन ऑफ मार्स मून्स and understanding whether they are captured asteroids or formed from existing debris। ये important है कि ये मार्स के जो मून हैं, फोर्बोज एंड दिस क्या नाम है, डीमोस, ठीक है, they will study that this surface samples collection and all that, and they will understand whether they are captured asteroids। कि अगर मान लीजिए दिस इज दी दिस अगर ये ग्रह है, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटी लगती है उसके कारण है, या ये एग्जिस्टिंग डेब्रिस का पार्ट है, ठीक है, कि इधर से ना आके दे वर ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द planet or formed from existing debris। तो लेट्स मूव ईएसए का हेरा मिशन। तो ईएसए यूरोप्स, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हेरा मिशन follows NASA DART mission to the Didymos Dimorphos asteroid mission, ठीक है। एक दिमाग में रखना, अगर ऐसा टर्म सुनाई दे तो इन्हीं का होगा, ठीक है। Kinetic impact technique. Testing planetary defense techniques. Hera will study the physical properties of the asteroids after that's kinetic impact, ठीक है। Launch detail October 2024 with arrival of Didymos Dimorphos expected in late 2026, contributing valuable insights for planetary defense strategies, ठीक है। So with that, we are done for today, and we are done for this lecture. So a big thank you for being with me, ठीक है। uh, Lastly, I would like to thank Chandrasekhar sir for giving me this opportunity to teach, and also that if you want a mentorship program, call this number, call, have a word with Chandrasekhar sir uh, regarding your exam preparation, try to get a mentor, try to have a basic idea किस तरीके से, be it any stage, आप कहीं भी हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है, have a, you know, it's always good to have a mentor at your back। So call this number, get a basic idea, and if you like the lecture, please do follow our YouTube channel and our Telegram channel। So thank you, and have a good day. Bye bye.